Hello, dear students. Hope you all are very fine. Today, we are going to start a new topic, and the topic is water cycle. Right now, in this topic, we are going to study about water cycle. Water cycle is a continuous and constant movement of water on, above, and below the surface of the earth. The water from the seas, lakes, rivers, and ponds evaporates due to the energy of the sun and goes into the air as a water vapor. This is called evaporations. Now what is given here? You can see a beautiful picture here. Right now, here sun is there, clouds, snow, some trees are there, river is here, groundwater is here. In this, what you can see, due to the heat of the sun, this water, okay, which is here in the sea or in the river or in the lakes right now, what is happening? This water is changing into water vapor, okay, and slowly it is going up, right now. And what is given here, this is energy of the sun and goes into the air as a water vapor. This process, when it is going up, this process is called evaporations. Now what is happening here? When the water vapor is going up, what happens? The water vapor rises up in the air. जो वाटर वेपर है वो हवा में राइज अप किया है, कूल्स एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, अब ऊपर चले गई. राइट नो, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस अप. अब ऊपर जाने के बाद व्हाट हैपेंस? इट कूल्स, वो ठंडा हो जाती है, एंड इट चेंजेस अगेन इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. क्लियर? फर्स्ट व्हाट इज हियर? In the sea there is water. Due to the heat of the sun it is rising up, right? No, it changes into water vapor, and again when it goes up, there it cools down. जब ठंडा होती है तो ये water droplets बन जाती है. Now what happens? Like this water droplets collect together and take the shape of clouds. कितने सुंदर से लिखा हुआ है कि ये वाटर ड्रॉपलेट जब एक साथ कलेक्ट हो जाती है, जमा होती है, एंड व्हाट हैपेंस? इट टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स, ये बादल बन जाती है. आई होप यू हैव सीन द क्लाउड्स. तो आप लोग क्लाउड्स जरूर देखे होंगे. व्हाट इज क्लाउड? नाउ यू कैन से द क्लाउड इज अ collections of water droplets. Means clouds are made up of water droplets. क्लाउड किससे बना हुआ है? वाटर ड्रॉपलेट से. और वो वाटर ड्रॉपलेट्स किससे बना है? वाटर वेपर जो हम लोग का सीज रिवर्स से राइज अप किया था. राइट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन. इवेपोरेशन सब लोग समझ गए कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इज राइजिंग अप, the water and it changes into water vapor and it is rising up, right? This is called evaporations. And when the water vapor rises up in the air and cools and changes into water droplet, जब वो ऊपर उड़ गई और फिर ठंडा हो गया और वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट टुगेदर, और वो एक साथ क्या होती है? जमा हो जाती है, एंड टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स, और वो बादल के शेप में ले लेती है. इस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. इजी. Now, as more and more water droplets collect, the clouds become heavy and big. जितना जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स और जमा हो जाती है, वो क्लाउड्स और बड़ा और भारी होते जाती है. Now, these water droplets fall down in the form of rain, hail and snow. और यही वाटर ड्रॉपलेट्स अब क्या हो गया? रेन के रूप में, हेल के रूप में एंड स्नो के रूप में वो नीचे आ जाती है. The rain water again flows back into water bodies. Now see, this clouds is coming down right now through rain, right? ये rain के रूप में गिर रहा है, ये snow के रूप में गिर रहा है, and this one again collected in the seas or in the rivers or in the lakes, right now. The water from the water bodies again turns into vapor when heated by sun. Again this one is collected here. Again the same process is going on. Means due to the heat of the sun, again this water vapor is rising up. Means evaporation is taking place. When it goes up, their condensation is taking place, and again this one is coming down. Like this it is going on. So what we are calling it, it's a water cycle. Right now this one is taking continuous and constantly. Right now the water from the water bodies again turns into vapor when heated by the sun. The process goes on repeating. Means ये निरंतर लगातार क्या होती है? चलती रहती है. This continuous process is called the water cycle, and what we are calling it? We are calling it water cycle. Hope, dear students, you have understood this topic. Oh, thank you very much for watching my video.